Hello, my dear students. Good afternoon. Good afternoon and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. Welcome to BYJU'S Exam Prep. जल्दी से आइए. Let's do this session on para-based questions. Small paragraphs where you are asked some questions. Let's try those. Okay. Let's try those questions where you are asked some. Dev, welcome, beta. Where are the others? Others also join me quickly. Okay, and we will do some questions on. Okay, we will do some questions on small paragraphs. Okay, join me quickly. Dev has come, and where are the others? I want others also to join. Only then. Okay. So, hi, beta. Zaid. Okay. So let's start. Okay. The first question is, before we go to the first question, let me give you some good news that we have a batch for BBA Foundation 2022, a course for IPMAT, DU Chat, Set B and PAT exams. Okay, you can, and the batches are on, you can enroll now. And then for DU Chat 2021 crash courses are also going on, you can join this too. Okay, so these are the two courses that you can join as of now. Okay, which are already running. Okay, there are also other batches that you can join, but these two batches, if you're looking for looking to take the DU JAT, you should go for this. Okay. Now, para-based questions for English for BBA IPM. Okay. What are the kind of questions we get and what should we do? Sir, ये छोटे-छोटे paragraphs जो आते हैं, उस पे based questions आते हैं. What are we supposed to do? Now, the problem is if you do not understand how a passage works, it will be difficult for you. Okay, पैसेज के मैकेनिक्स क्या है, माने मैकेनिज्म क्या है, हाउ डज अ पैसेज वर्क, ये आपको आइडिया लगना चाहिए. ठीक है, ये शायद मैंने दूसरे क्लासेस में भी बताया है व्हेन आई हैव बीन डिस्कसिंग दिस. ओके, ऑलवेज रिमेंबर अ पैसेज इफ इट इज एन आर्गुमेंटेटिव पैसेज, मतलब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ऑथर का एक ओपिनियन है मान लो. ठीक है, तो किस ओपिनियन वाला या कोई ही इज ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, ही इज ट्राइंग टू गिव अ सॉल्यूशन, देन ही विल ऑलवेज डू इट ऑन टू थिंग्स. सॉल्यूशन दे रहा है तो he'll tell what the problem is. yes, ये तो करना ही पड़ेगा ना. सॉल्यूशन अगर मैं दूं तो प्रॉब्लम बताना पड़ेगा. अगर मैं बोलता हूं यार एक इश्यू है तो उसके रीजंस बताने पड़ेंगे. वो रीजंस के, वो इश्यू के क्या रीजंस हैं. कभी कभी फिर एक इश्यू बोलता हूं, आई एनालाइज इट, आई लुक एट द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इश्यू. तो देयर आर ऑलवेज टू कंपोनेंट्स टू अ पैराग्राफ. क्या क्या, एक उसकी कंक्लूजन, लेट अस कॉल दिस कंक्लूजन, इसको कंक्लूजन कह लेते हैं. ठीक है, और इसको बोलते हैं सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन. सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो पैसेज जब भी लिखता हूं तो दो चीजों, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ टू थिंग्स, दैट आई हैव what I have to say, that is my purpose of writing. The author has to state his purpose and also make sure that he supports his claim with data. These two things will always be there in a passage. So until and unless you understand this, passage based questions are not easy. याद रखना, क्योंकि because if you don't know what the author is trying to say and where he is actually putting forth his main point कहाँ बोल रहा है वो पता ही नहीं है. ठीक है, तो फिर बाकी सारे क्वेश्चंस भी आंसर नहीं होते हैं. So it's important to understand that supporting information. Good afternoon, beta. Okay, supporting information leads to the conclusion. Okay, so let's come to this. Let's move on to the next one and see. I'll show you a question. Try to answer it. ठीक है, गगन वेलकम बेटा. Okay, try to answer it. Okay, अब इसमें देखो, read this, इस पैसेज को पढ़ो and I'll ask you a question. उसके बाद आगे बढ़ेंगे.
Good passage, right? Read it? Okay. What is the passage trying to say? Batana jara. Dev, Zaid, and Gagan. Tell me, what is the passage trying to tell us? But intellectuals do not take what is offered to them on face value. They will question. Okay, and they are not interested in say it says unqualified assertions. That is, if you do not know, I make an assertion without really knowing, without really telling you the fact. Okay, they'll not get into this. He says people who are intellectuals. Okay, they'll not go for oversimplification. Okay, it's something that is not to be simplified to that extent. Okay, we do it. Okay, and it is all done by, see, the political class, irrespective of whatever party, they do this all the time. Okay, and there are only a few who will question this. Most of us don't care. Most of us don't care. Okay, so that is the kind of passage here. Okay, that's what I've seen in my life. Every politician tries to oversimplify and make things look as if everything is rosy, and what we do is, yes, we start believing in it, right? Okay, it was happening then, it is happening now, it will happen in the future also. It's not going to stop. Okay, so they regard oversimplifications. Junaid, welcome, beta. They regard oversimplification as the original sin of the mind and have no use for slogans, the unqualified assertions and sweeping generalizations, which are the propagandists' stock in trade. जो अपनी चीज को हर जगह बोलना चाहता है without any supporting information, they propaganda. When they spread the news, but intellectuals will keep asking. They'll keep asking questions. जुनेद बेटा, सारा हिंदी में बोल दूंगा तो कैसे करोगे बताओ? एग्जाम तो इंग्लिश में है, वो भी इंग्लिश का पेपर है, हिंदी में कैसे बताऊं? ओके, हिंदी में कैसे बता दूं? बोलो. एनीवे, चलो कोई दिक्कत नहीं. ओके, हिंदी में भी बता दूंगा, कुछ हिंदी में बता दूंगा, लेकिन सारी चीजें एक्सपेक्ट मत करना हिंदी में बताने के लिए. ओके, सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. ओके, इंटेलेक्चुअल्स आर द काइंड ऑफ पीपल हु क्या चाहते हैं? डिमांड लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फॉलासीज, इग्नोर फॉल्टी लॉजिक एंड रॉन्ग बिलीव्स. इंटेलेक्चुअल्स को क्या चाहिए? याद रखना, मोर ऑफन देन नॉट क्या करते हैं? सुनना, हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, इसीलिए आंसर गलत होता है. पैसेज समझ जाते हो, यू अंडरस्टैंड द पैसेज वेल, नो क्वेश्चन अबाउट दैट. ओके, बट इफ आई आस्क यू व्हाट इज द क्वेश्चन ही नहीं समझ आया तो आंसर तो सारे के सारे सही हैं, और फिर आप इधर उधर तुक्का मारने लगते हो, गेसिंग करने लगते हो. So understand the question well. What does it say? Intellectuals are the kind of people who, that is, what do intellectuals like? That is the question. Okay, so tell me the answer. Tell me the correct answer. What are the topics we include in general English? We include comprehension, beta, and grammar. For IPM, for IPMAT, it is, and DUJAT, it's important to include grammar as well as reading comprehension. A lot of reading comprehension, a bit of grammar, and some vocabulary. ठीक है, चलो, let's understand. इसका आंसर दो मुझे. What is the answer to this question? What do intellectual people say? बताने इसके लिए क्या आंसर है? डिमांड लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज एंड फॉलासीज, उसी पे तो, उसके अगेंस्ट में ही तो काम करते हैं. उनको ये नहीं चाहिए. दे डोंट वांट लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज, दे वांट लॉजिकल कंसिस्टेंसीज. तो जिसमें लॉजिकली कंसिस्टेंट लिखा होगा वो चाहिए. विच वन इज द आंसर? श्रुति, यस, ऑल ऑफ यू, टेल मी नाउ. What is the answer? Logically inconsistency नहीं चाहिए, fallacies नहीं चाहिए. Fallacy का मतलब है त्रुटि, सोच में त्रुटि. ठीक है, गलत कारण बता करके आपको नतीजे में पहुंचाना. ठीक है, कारण कुछ और है, ठीक है, लेकिन ऐसे बताया गया कि वो कारण नहीं है, ये है, इसके चलते हो रहा है. ठीक है, और मैं जो एक्चुअल चीज है उसको छुपा लेता हूँ और दूसरे चीज को कारण बता के निकाल लेता हूँ. Fallacy.
So बताओ क्या आंसर होना चाहिए? Now tell me. Intellectuals are the kind of people who don't demand, they want logical consistency and fallacy. किस में लिखा हुआ है बताना? You want to be logically consistent. कौन किस में लिखा है? That is the answer. ये तो easy था. नहीं बताया किसी ने भी. Okay. बता क्या आंसर होना चाहिए? नहीं समझ रहा ना? पैसेजेस में ये मैंने व्हाट डज द पैसेज से? इंटेलेक्चुअल्स वांट कि भाई अगर आप कोई बात बता रहे हो तो लॉजिकली कंसिस्टेंट हो और एविडेंस खूब सारा हो, सपोर्ट बहुत सारा हो. डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, डी इज द करेक्ट आंसर. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपको डीयू चैट में भी, मैट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी पैसेजेस भी आते हैं. सो बिवेयर. ओके, फॉलिसीज का मीनिंग क्या है? ओनली नाउ आई वाज like explaining the concept to you. False evidence बोलना चाहिए, false beliefs बोलना चाहिए, illogical arguments हैं या inconsistencies हैं. What do we mean by fallacies? Fallacy का मतलब है कारण कुछ बोलना और रीजन कुछ और बताना, ये नतीजा कुछ और बताना. ठीक है? What could be the answer to this? लॉजिकल फॉलिसीज वी से एक बता रहा हूं, मतलब उससे गेस करना. ठीक है? लेट मी टेल यू एन एग्जांपल ऑफ अ लॉजिकल फॉलिसी एंड यू टेल मी व्हाट इज दिस वन हियर. ओके, व्हिच वन इज द आंसर हियर? आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल से बताना. ठीक है? पहले सुनना. ओके, रवि वेंट इनटू द रूम. रवि वेंट इनटू द रूम. ओके, and came out. Suresh went into the room and came out. Okay, and when I went into the room, I found the glass broken. I found a glass broken. Ravi went into the room and came out. Suresh went into the room and came out. So when I went in, I found a glass broken. Therefore, Suresh is to blame. ये क्या है बताओ? इलॉजिकल तो है, कौन सा है इसमें? विच वन इज इट? इज इट इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट? इज इट एन इनकंसिस्टेंसी और फॉल्स बिलीफ और फॉल्स एविडेंस? व्हाट इज द आंसर? सोच के बताना. A fallacy is that. Okay, think about it and then tell me. Take this example and then tell me. रवि रूम में गया, वापस आया. सुरेश रूम में गया, वापस आया. मैं रूम में गया तो मैं देखा कि ग्लास टूटा हुआ है, तो मैंने बोला सुरेश ही होगा. मैं विश्वास करता हूं कि सुरेश ही होगा. सो व्हाट इज द आंसर डू यू थिंक? इज इट एन इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट और फॉल्स एविडेंस और फॉल्स बिलीफ? विनोद सर कर क्या रहे हैं? व्हाट इज इट? बोंजूर किरण साई. ओके, इट इज बी. इट्स अ फॉल्स बिलीफ. फॉलिसी इज अ फॉल्स बिलीफ बिकॉज यू आर पुटिंग इट ऑन. इसमें क्या देखो, हो तो सकता है. It's not illogical. It is possible that Suresh was the culprit. It is also possible that Ravi was the culprit. It is also possible that neither Ravi nor Suresh was culpable. I'm to blame. I broke it. Or else there was somebody else. It was not Ravi. It was not Suresh. It was somebody else. But Suresh being at fault is a possibility. तो मैं सुरेश को ही नहीं बोल सकता. ठीक है? फॉर दैट आई रिक्वायर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन. देयरफॉर इट्स अ फॉल्स बिलीफ बिकॉज यू आर ड्रॉइंग कंक्लूजन ऑन समथिंग दैट हैपेंड इमीडिएटली बिफोर. ठीक है? ऐसे सब पॉलिसीज के भी नाम है. ठीक है? वो दुनिया भर के पॉलिसीज हैं, वो सबके भी नाम है. फिलोसफी पढ़ोगे तो समझ में आएगा. एंड दीज आर रिक्वायर्ड फॉर अ मैनेजर. द मैनेजर हैज टू लुक इनटू दैट. राइट? क्यों सर इफमैट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि एज अ मैनेजर इफ समबडी आर्ग्यूज, यू शुड सी वेदर इट्स अ वैलिड आर्गुमेंट और इट्स नॉट अ वैलिड आर्गुमेंट. सो देयरफॉर you are always asked such kind of questions. Okay, chalo, next question. The answer is B. To the next one. A trait which intellectuals do not possess is. Intellectuals के पास में एक characteristic, एक feature नहीं होता. Critical thinking, rationality नहीं होता, over simplification नहीं होता, logical thinking नहीं होता. क्या चीज नहीं होता? This is a very easy question. Tell me the answer to this. Good afternoon, beta Ayush. A trait which intellectuals do not possess.
इंटेलेक्चुअल्स में जो ट्रेट नहीं होता वो क्या है? डी, इंटेलेक्चुअल्स में नहीं होता. At ATMD, did you read the passage beta, or you are just giving an answer just like that? Giving an answer just like that, don't do that. पैसेज नहीं देखा हो तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना बेकार ही है. ओवर सिंप्लीफिकेशन में वो ये नहीं करते, विश्वास नहीं करते. समथिंग दैट इज नॉट टू बी सी, देयर इज एक चीज समझना. कभी कभी हम क्या कर जाते हैं, किसी चीज को इतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जो कि वो इतना सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बट वी ट्राई टू डू इट. Okay, somebody has lost a lots of money. Say he has lost say 10 lakhs. Okay, and you go and tell him, अच्छा भूल जाओ यार, चलो बाद में आ ही जाएगा, इतना कमा लेंगे. Oh, come on, I should go to the police. I cannot oversimplify it and just say कि okay, बहुत billions में कमाता तो कोई बात था. 10 lakhs is a huge sum. Okay, suppose somebody loses money to fishing. Okay, fishing हो गया, 10 लाख रुपए चले और तुमको सांत्वना दे रहे हो, मैंने यू आर ट्राइंग टू कंफर्ट हिम बाय सेइंग कि 10 ही लाख रुपए ना जाने दो ना, दोबारा कमा लोगे. नाउ दैट इज ओवर सिंप्लीफिकेशन, एंड दैट इज व्हाट इंटेलेक्चुअल्स विल नॉट डू. दे विल नॉट ओवर सिंप्लीफाई. ओके, सही तरीके से सोच के आंसर देना. द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज सजेस्ट्स दैट. सो द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज, सो लेट्स गो टू द फर्स्ट सेंटेंस एंड सी. Let's go to the first sentence and see. Okay. Unlike the masses, intellectuals have a taste for rationality and an interest in facts. Okay, so tell me. Koi nahi. Then do the next one, Ayush. Do the next passage. These are very good passages. These are really good passages. Unlike the masses, intellectuals have a taste for rationality and an interest in facts. So tell me, what do you think? Okay, उस sentence को बताना है. We'll go to the question now. If you have read it, we'll go to the question. What is the answer to this? The first sentence of the passage suggests that all individuals have a taste for rationality and an interest in facts. Okay, group consists of intellectuals. Groups consists of intellectuals. Intellectuals behave like individuals, not like members of a crowd. Okay, individuals are intellectuals. What is the meaning of the first sentence? क्या लिखा है? इंटेलेक्चुअल्स को क्या चाहिए? वो सब चीज अपनी समझ से समझ के ही वो कुछ भी करेंगे, लोगों के कहने के चलते नहीं करेंगे, खुद की थिंकिंग से करेंगे. सो व्हाट इज द आंसर? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आंसर इट करेक्टली. Very good. The answer is C. Very good. Intellectuals behave like individuals, not like members of a crowd. Very good. Absolutely. That is, you cannot make them fools by asking you to behave like a say in the like people who are as a crowd doing it. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है देखना. Individuals and intellectuals. Come on. I think the answer is incorrect. Let's see. Unlike the masses, intellectuals have a taste for rationality and an interest in facts. I think the answer is incorrect. I think the answer is incorrect. Yeah, the answer is incorrect. So let's go to that. Okay, it is intellectuals. Individuals are intellectuals. No. Intellectuals have behaved like individuals, not like members of crowd. D is wrong. So the answer given is D. We will change it to C. Get to the next question then. The majority of people resist propaganda, do not possess a critical habit of mind, work well with the intellectuals. From the passage, what can we understand? पूरा passage पढ़ के कैसा लग रहा है? Resist propaganda, do not possess a critical habit of mind, or work well with intellectuals, या possess a critical habit of mind. Majority of people, लोगों की बात कर रहा है, intellectuals की बात नहीं कर रहा है. तो ये क्या करते हैं? ठीक है, let us go back to the passage again. Now some of you did not read the entire passage. I am going to give you time to read the passage. Passage को ही पढ़ो, लो पूरा ही पढ़ो, मजा आएगा फिर कुछ क्वेश्चन आंसर देने में.
Read the entire question. Read the passage. ATMD passage पढ़ लो बेटा, उसके बाद So what is the answer? The majority of people, what do they do? It is, we do not possess a critical habit of mind. Absolutely, बहुत बढ़िया. Now it's correct. ठीक है, तो ऐसी तुक्का मत मारना जब पढ़े नहीं हो. ATMD, I don't know what your name is. ठीक है, ऐसे मत मारना, सही नहीं है. ठीक है, नहीं पढ़ो मत आंसर. ठीक है. Now to the next question, next passage. Now read this. Now this is a narrative. आज तो पूरा पूरी यही है, कॉम्प्रिहेंशन ही. देयर आर 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस. बस इसको आंसर करो. ये तो नैरेटिव पैसेज, इट्स अ स्टोरी. Done? Okay, let's go to the questions now. What was the man wearing? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो गलती मत करो. What was the man wearing? Very good. Ankita, you did a very good thing. And Ayush also. सब हड़बड़ी देखो. जायद, इतनी हड़बड़ी क्या, पूरा ऑप्शन तो पढ़ लो. पूरा ऑप्शन तो पढ़ लो. हड़बड़ा के गलती, हाँ गलती मत कर देना. वो तो दोनों ही पहना हुआ था. डोंट बी इन अ हरी. जल्दी करोगे तो ऐसी गलतियां होंगी. ठीक है, वेरी गुड. अंकिता वाज वेरी स्मार्ट. बड़े आराम से पढ़ के आंसर दिया उसने. बहुत बढ़िया. Now to the next question. Mention those which cross the bridge besides human beings. Human beings के अलावा क्या क्या था? Mules and horses, men, women and children, carts and trucks, soldiers and carts. ठीक है, wait. Let me show you the passage. ठीक है, passage देख लो. कहीं ऐसा ना हो कि भाई passage नहीं देखा तो अंटसेंट आंसर दे रहे हो, वो भी मत करो. Okay, let me show you the passage itself. पढ़ लो, समझ लो और फिर क्वेश्चन का जवाब दे दो. क्या क्या था बताना. What all were there? इसमें क्या क्वेश्चन क्या है पूछना? Which cross the bridge besides human beings? ब्रिज को क्रॉस करने के बारे में बताना है. वहां कितने लोग हैं वो नहीं बताना है. ब्रिज को कितने लोगों ने क्या क्या नहीं क्रॉस किया उसको. ठीक है, मेंशन दोस बिसाइड्स ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स को छोड़, तब तो तुरंत क्या छूट जाना चाहिए?
men, women and children, वो तो ऐसे ही छूट जाना चाहिए. Soldiers छूट जाना चाहिए. दो आंसर तो ऐसे ही चला गया, क्योंकि besides human beings बोला है. समझ रहा हूं? अगर besides human beings बोला है तो दो चीज तो छूट जाना चाहिए. ठीक है, तो let's come to this one, the question now. ठीक है, क्वेश्चन दिखाता हूं. अब बताओ क्या आंसर है, फट से बताओ. तो अब तो इजी है सर. पैसेज देख देख करके तो बताइए. बिसाइड्स लिखा है क्वेश्चन में, देखना. अब बताना. तो एक ही तो है सर, दो आंसर तो चला गया. बी और डी तो लिख नहीं सकते. म्यूल्स एंड हॉर्सेस, कार्ट्स एंड ट्रक्स. कार्ट्स लिखा हुआ था, ट्रक्स तो सी हो गया, तो सी तो आंसर, बस हो गया, डन. वेरी नाइस. बट रिमेंबर, दीज क्वेश्चंस आर ट्रिकी बिकॉज वी डू नॉट रीड दिस. ये सब पढ़ते नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देते. क्वेश्चंस गलत पढ़ोगे, आंसर गलत हो ही जाएगा. बिसाइड्स ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स को छोड़, तब तो सर ये दो तो पहले हटा दो. ह्यूमन बींग्स तो दो पे आ गए. ठीक है, अब दो ही आंसर ही था, अब उसको देखकर एक बार लिख देते, हो जाता. Okay, now come to the next question. Who were helping to push the mule-drawn carts? The mule-drawn carts. ये तो easy question है. Who were helping to move the mule-drawn carts? Soldiers. Very good, Kritika. Very nice. The answer is D, the soldiers. Okay. Where was the old man sitting? In the cart over the bridge, by the side of the road, on the banks of the river. Now again, you want to see the passage, you can see the passage and answer it. But if you remember, if you recall, tell me. If you do not recall, I'll show you the okay. What are we talking about? पूरा passage किसके बारे में बात कर रहा था? तो कहाँ बैठा होगा? And he was not moving. See, these questions are, see, whether you are going for SSC or whatever, free classes, और अगर तुमको अच्छे classes लगते हैं तो you should come, because the level of comprehension passages will be different, and that is important for SSC tier 2. tier 2 में ऐसे questions आते हैं, easy, seemingly easy, लेकिन क्वेश्चन को गलत पढ़ेंगे, आंसर गलत देंगे. Right? So what do you think is the answer? Where was the old man sitting? By the side of the road. By the side of the road. We are talking about the bridge, man. ब्रिज के बारे में बात कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए? By the side of the road था या on the banks of the river था? बैंक्स पे तो नहीं था, साइड ऑफ द रोड ही था. ठीक है, नहीं, सी पे ही था. सही है, यू आर राइट. आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज्ड. ठीक है, सही कर रहा हूं, सी ही, बाय द साइड ऑफ द रोड. ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी नाइस. व्हाई वाज ही सिटिंग देयर? टू एडमायर द नेचुरल सीनरी, टू वॉच द पीपल पासिंग बाय, बिकॉज ही वाज सो टायर्ड दैट ही कुडंट गो एनी फर्दर, वेटिंग फॉर समबडी. व्हाट इज गिवन इन द पैसेज? याद है? पैसेज में क्या दिया हुआ था, याद है? Do you recall, or you want to see the passage? Do you recall, or you want to see the passage? Because she was so tired. Very good. You read that. Very nice. ठीक है, दिमाग में है तो बहुत बढ़िया. Very good. The answer must be C. देखते हैं C आंसर है कि नहीं. Of course it is. It was a very easy passage, but the first one was tricky. The first one was tricky because it was talking about how intellectual, the characteristics of intellectuals, that is a belief, किसी का विश्वास कि भाई intellectual ज़्यादा critical habit रखते हैं, वो ये. ठीक है, so immediately because of the subject you do not understand. Subject अगर टेढ़ा हो गया तो हमको समझ में नहीं आता. Do a lot of reading. That is how you will be saved. Okay, thank you all very much for attending this session. You have done well, which is very good. Okay, keep following BYJU'S Exam Prep. Okay, I'm Vinod Shankaran signing off, and I welcome all of you. These guys, Ayush, etc. Please do come to these classes. They are important. Apart from making a little crowd,
you'll also make me feel as if I'm doing something worthwhile. Because BBA students, they don't show up. And BBA students, please ask your friends to subscribe, like, share, and ask your friends to come and make use of these sessions, beta. Okay, thank you all very much. Bye-bye. See you.